Nepal telah membara, protes dalam skala besar sudah terjadi. Aksi tersebut mayoritas dilakukan oleh generasi muda sejak 8 September 2025. Mereka turun ke jalan untuk mendesak adanya perubahan dari pemerintahan. Aksi protes di Nepal pecah akibat kebijakan pemerintah yang memblokir platform media sosial. Para generasi muda merasa informasi dibatasi. Mereka bergabung dan menumpuk di gedung parlemen Kathmandu. Mereka mendesak pemerintah mencabut larangan media sosial. Amarah mereka memuncak karena adanya pemblokiran media sosial yang dianggap mengekang kebebasan dalam berekspresi di tengah munculnya isu korupsi. Kericuhan terjadi dan tak bisa terkendali. Demo tersebut berujung pada tragedi setelah 21 korban meninggal dunia. Sementara itu, hingga berita ini dibuat sudah ada 400 orang terluka akibat tindakan dari aparat. Warga Nepal yang berusia 13 hingga 28 tahun menuding pemerintah tak mampu memberangus korupsi yang telah menahun. Para Gen Z tersebut merasa terluka dengan pemerintahan yang diduga korup selama puluhan tahun. Kekesalan peserta demo mencapai pada titik klimaks saat pemerintah Nepal menutup Facebook, Instagram, WhatsApp, X, hingga YouTube, juga LinkedIn. Menurut pemerintah Nepal, kebijakan itu untuk menampik hoaks dan ujaran kebencian, juga menekan perusahaan teknologi asing agar secara resmi terdaftar di Nepal. Namun, seperti ular kena bedal, keputusan itu mengundang demonstrasi di ibu kota Kathmandu dan kota-kota lainnya. Padahal, sebelumnya pemerintah telah mencabut pemblokiran media sosial. Namun, nasi telah menjadi bubur. Gelombang aksi terus terjadi. Berdasarkan data dari Bank Dunia, pemuda di Nepal yang menganggur sampai dengan tahun 2024 sejumlah 20,8%. Keadaan itu menambah situasi semakin memburuk dengan adanya gerakan online yang menentang Nepo Kids, yakni anak-anak politisi yang memamerkan gaya hidup hedonis. Hal itu seolah membesarkan bara api. Publik semakin marah karena adanya kesenjangan sosial dari praktik nepotisme. Para peserta aksi tak main-main. Mereka bahkan mengarak Menteri Keuangan. Dari video yang beredar, Menteri Keuangan Nepal berlari menghindar dari massa, bahkan ia mendapatkan serangan fisik dari sejumlah orang. Sejak kericuhan terjadi di Nepal yang bahkan mengarah ke kediaman para pejabatnya, membuat pemimpin Nepal mundur. Presiden Nepal mengundurkan diri beberapa jam setelah Perdana Menteri Nepal juga mundur akibat demonstrasi yang rusuh hingga memicu aksi pembakaran rumah pejabat. Keadaan itu membuat Nepal berjalan tanpa pemimpin. Kabar mengejutkan datang dari mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, yakni Raja Laksmi Citrarakar. Ia meninggal dunia akibat terjebak dalam rumahnya saat massa membakar rumahnya. Berdasarkan informasi, Citrarakar sempat dilarikan ke rumah sakit, namun ia dalam keadaan sudah sangat kritis. Ia mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh, namun nyawanya tak tertolong. Diketahui para pemimpin Nepal berlindung di balik aparat keamanan. Mereka, para demonstran telah menentang jam malam di Kathmandu dan sekitarnya. Mereka mendesak adanya akuntabilitas dan reformasi dalam pemerintahan. Dikhawatirkan aksi protes hingga kerusuhan terus berlanjut jika pemerintah tidak mendengarkan tuntutan dari mahasiswa dan berbagai elemen kelompok masyarakat. Keadaan Nepal yang tak menentu mau tak mau membuat warga yang terdampak harus meninggalkan kota. Mereka pergi ke perbatasan atau pergi ke layanan kesehatan untuk pemulihan. शादी हो रखा है मेरा। तो फिर कैसे आई जब ऑटो पूरा बंद है, क्या बोला गया? मैं वॉक करके आई हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ कस्टम पे थी और मेरे को डंकन हॉस्पिटल में दिखाना है, तो मेरे को पास करे वो लोग। बहुत दिक्कत हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता से जा रहे हैं। काम से Di sisi lain, mereka yang terdampak bahkan tak bisa beraktivitas. Sebagian dari mereka, warga yang terdampak, tidak dapat keluar dari penginapan mereka. काम से गए थे हम हमें हर एक महीना ही हम जाते हैं, एजुकेशन में हम हैं। अच्छा, तो कब से गए हुए थे? 2 दिन हुआ है, कोई कस्टमर बाहर नहीं निकले, तो खाना पीना होटल के अंदर में ही था सब। आज लौटने दे रहा है? लौटने दे रहे हैं, बस रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, उनको सच बताना पड़ रहा है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आईडी कार्ड दिखाना पड़ रहा है, बट दे आर
वेरी कंफर्टेबल, मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। जितने भी बॉर्डर में थे सबने अच्छा व्यवहार किया, आने दिया। Sementara itu, dampak aksi yang terjadi membuat mereka para pengusaha buka suara, mengungkapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah demi keadaan yang lebih baik. देशले एउटा गति त लिएला। अब छुट्टै अहिलेसम्मको जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन इन्फ्लुएन्स थियो, दबदबा थियो अहिलेसम्म, यसले चाहिँ अब पोलिटिकल पार्टीहरूले केही न केही त सिक्छन् होला। देश र जनताभन्दा माथि अरू ठुलो कुरो केही छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। Di sisi lain, seorang mantan polisi mengungkapkan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait keamanan mereka. यसको यो युवाहरू जो गरिरहेछ नि त्यो चाहिँ गलत होइन, तर अहिले देश परिवर्तन हुनु चाहिँ राम्रो हो। तर यो आगजनी भन्नु यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको नेपालकै सम्पत्तिलाई चाहिँ ध्वस्त गर्नु चाहिँ गलत हो, तर परिवर्तन हुनु चाहिँ जरुरी छ। Geliat para peserta demo juga muncul hingga di bandara. Asap tampak membumbung tinggi di Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu. Kebakaran membuat wisatawan tertahan di bandara. Mereka tampak berdiskusi dengan petugas bandara. Kericuhan yang terjadi hingga kebakaran di bandara membuat visibilitas sangat rendah, sehingga pesawat tak bisa melakukan penerbangan. Kebakaran itu membuat pergerakan wisata menjadi terhenti. Pada lokasi lain, tepatnya di pusat konvensi Birendra di Kathmandu, juga dilalap api. Para pengunjuk rasa telah menentang jam malam. Mereka kebanyakan dari kaum Gen Z yang mengutuk keras korupsi pemerintah dan pemblokiran media sosial. अब यो व्यवस्था ढलिसक्यो। केपी ओली, शेरबहादुर देउबा, दाई भाउजू देवरहरूको केही अस्तित्व छैन। सबैको अब पार्टी कार्यालय जलिसक्यो, नेताहरूको घर जलिसक्यो। संसद यसको हालत छ जहाँ जनताको शब्द बोलिनु पर्ने हो। एक्जिक्युटिभमा त भरोसा भएन मान्छेहरूले, संसद लेजिस्लेचरमा नि भरोसा छैन। यो आन्दोलन भनेको नेता फालेर मात्र सकेर हुँदैन। यसले अख्तियार, जुडिसियरी र को पूर्ण रिफर्म गर्नुपर्छ र डाइरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ। प्रदेश हुन्छ हुँदैन हामीलाई थाहा भएन, भयो भने पनि डाइरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ। जो 19 जनाले शहीद भइसकेपछि, 20औं जना शहीद भइसकेपछि आज जेएनजी पुस्ताले देखाइदिएको छ, जहाँ नेपालका भ्रष्ट नेताहरूलाई आज उहाँहरूको सँगै संसद बस्ने संसद घर आज तोडेर सफलता प्राप्त गरेका छन्। Di sisi lain, polisi menyambut dengan gas air mata dan diduga menggunakan peluru tajam. Pihak berwenang semakin menambah jam malam. Hingga berita ini dibuat, ratusan orang terluka termasuk mereka dari pihak kepolisian. Menanggapi hal tersebut, Panglima Tentara Nepal mengungkapkan soal imbauan pada demonstran untuk menekan gelombang protes dan mengajak mereka untuk melakukan diskusi. राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तसर्थ यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौँ।